Very good morning, dear students. In previous video, we people have completed your pteridophytes, right? Now, we are going to start with your seed plants, that is your spermatophyta, and to be more specific, iske andar, in today's video, we people are going to discuss your gymnosperms. Am I clear? Okay. Now, what is speciality of these gymnosperms? ये जो सारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, all of these gymnosperms are having naked seed. Okay, all of these gymnosperms are having naked seed. Now, if I am talking about naked seed, इसका मतलब होता क्या है? Normally, in angiospermic plants, जो आपके flowering plants होते हैं, right? We are having fruits. What we are having, the product of fertilization is fruits, yes or no? The wall of fruit is nothing but your ovary, and inside the seed is present. Okay, so in angiospermic plants आपका जो seed होता है is covered by ovary, which after fertilization, post fertilization किसमें convert हो जाता है? fruit में convert हो जाता है. But in your gymnospermic plants, your ovules, okay, here I can say, आपके जो ovules होते हैं, ovules are not covered by ovary. Ovules are not covered by ovary. Am I clear? So इसकी वजह से after fertilization ये जो ovule है, ovule किसमें convert होता है? Seed में convert होता है. And since these do not have ovaries, there will be no fruit wall. And hence you can say that in gymnospermic plants आपका जो seed होता है वो naked होता है. You can see it. It is not covered by ovary. It is not covered by ovary. Simple as that. ठीक है? तो जब आपको कोई जिम्नोस्पर्म बोले, the first thing that should click in your mind is that these are plants having naked seed. इसका मतलब ओव्यूल है, ओव्यूल के सराउंडिंग ओवरीज नहीं होती, ओवरीज आर एब्सेंट. एम आई क्लियर? सो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड सीड्स यू कैन सी. And seeds you can see, simple as that. Now, if we are talking about your gymnosperms, right? Then these gymnosperms are your perennial plants. ज्यादातर ये कैसे होते हैं बच्चा जी आपके? They are perennial plants and are your trees. Right, which generally forms your buzzies, in the sense I am talking about perennial plant, and most of them, rather I should write over here, most of them are woody, okay, that forms your buzzies and trees, अब आपको पेरिनियल क्या है वो आप सबको पता होगा. यू पीपल हैव आई गेस अंडरस्टूड कैटेगरीज ऑफ प्लांट, राइट? एन्युअल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट्स एंड पेरिनियल प्लांट्स, ये आपने सुना होगा. सो जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स है वो कैसे है? पेरिनियल प्लांट है. ज्यादातर दे आर वुडी विच फॉर्म्स ट्रीज एंड बजीज. एम आई क्लियर? ओके, नाउ if we are talking about this trees, right? तो जो जिम्नोस्पर्म के अंदर टॉलेस्ट ट्री है, tallest tree, okay, the example is very much important. The tallest tree that is present in gymnosperm is called as your sequoia, okay, sempervirens, sequoia sempervirens. ठीक है? तो ये जो सिक्वोया sempervirens है is the tallest gymnosperm, सबसे ऊंचा, सबसे टॉल. ओके, gymnosperm is your sequoia sempervirens. Am I clear? Whereas एकदम छोटा, the smallest gymnosperm, if I want to write over here, smallest gymnosperm is your Zamia pygmea. कौन है आपका? Zamia. It's your pygmea. Am I clear? It's your Zamia pygmea. ठीक है? Since it is scientific name,
you have to underline it separately and first word should be capital, जो कि किसका होता है, जीनस या स्पीशीज, किसका होता है, जीनस, एंड सेकेंड नेम जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, आपकी स्पीशीज. एम आई क्लियर? दिस पीपल हैव अंडरस्टूड इन योर लिविंग वर्ल्ड. ओके, तो वापस से एक बार, जो पेरिनियल प्लांट्स है, सबसे ऊंचा, द टॉलेस्ट वन इज सिक्वोया sempervirens and the smallest one is Zamia pygmea. Am I clear? Of course, these gymnosperms are having vascular tissues, that is your xylem and phloem. Apart from this, they are also having well developed root, shoot and leaf system. Am I clear? तो अब आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपसे कोई पूछे कि किसकी थैलॉइड बॉडी होती है, तो योर आंसर विल बी algae and bryophytes, right? They are not differentiated into root, shoot and leaves, whereas higher plants, if we are talking about, that are your pteridophytes, gymnosperms and angiosperms, they have well developed root, shoot and leaf system. Am I clear? Okay, so if we are one by one, we are going to discuss first, we are going to discuss they are having roots. Now देखो बच्चा जी, ये जो roots होते हैं, right, in some of the gymnospermic plants, ये root के साथ association होता है fungus का, and you very well know that the association of fungus with roots of higher plant is called as mycorrhiza. ठीक है ना, ये हमने पढ़ा कहाँ पे, इन योर किंगडम फंजाई, दैट इज योर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सो ओवर हियर आई एम राइटिंग, ये जो रूट्स होते हैं हैव एसोसिएशन ऑफ रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, हैव एसोसिएशन विथ फंगस, यस और नो. And this association, yes, क्या बोला आप इसको, the association is called as your mycorrhiza, and such type of association is seen in case of a plant called as your pinus. तो बच्चा ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, राइट? अगर कोई आपसे पूछे कौन से जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में mycorrhizal association है, your answer will be pinus. Am I clear? Okay, now some of your root which are present in gymnospermic plants are called as your coralloid root. क्या कहते हैं इसको? Coralloid root. Now what is this type of root? It is very simple. This roots, over here I am writing, these roots have association. These roots have association with your cyanobacteria, right? Cyanobacteria is otherwise called as your blue-green algae. इसको क्या कहा जाता है? Blue-green algae कहा जाता है. And here they plays a very important role in, yes, क्या होगा? Yes, nitrogen fixation. Since, say for example, if we are talking about your nostoc and anabaena, they are having a specialized cell called as, क्या बोलते हैं इसको? Heterocyst, who plays a very important role in fixing atmospheric nitrogen. ठीक है, तो here some of the roots have association with cyanobacteria. तो ये रूट को कहा जाता है coralloid root, right? Plays an important role in nitrogen fixation, and such type of root is present in caicus. Okay, so ये जो रेड में लिखा है, they are the name of plants. Am I clear? तो for your understanding, देखो ये roots है, किसके roots है बेटा? Pinus के roots है, right? The roots of pinus have, as you can see over here, fungal association. Fungal body is your mycelium, yes or no? Mycelium are nothing but network of hyphae, as you can see over here. तो ये जो ब्लैक कलर पोर्शन मैंने ड्रॉ करा है वो आपकी क्या है? फंगस है. Am I clear? And such association is called as mycorrhiza.
versa. Okay, now if I want to draw the same for your caicus, तो ये caicus का रूट है, मान लीजिए ये caicus का रूट है. Okay, now this have association with, as you can see over here, ये जो red color dots है वो क्या है आपके, the red color dots are your cyanobacteria, and such roots are called as coralloid root, as in seen in case of your caicus. Am I clear? I hope ये आपको अच्छे से समझ आया होगा. ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करा किसके बारे में, रूट्स के बारे में. ओके, सो ओवर हियर we have discussed your roots, right? Now we are going to discuss your stem. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगा आपका, स्टेम. अब दिस इज वेरी सिंपल, आपकी जो स्टेम हो, राइट, दिस स्टेम कैन बी अनब्रांच्ड, ओके, और दिस कैन बी ब्रांच्ड. सिंपल एज दैट. नाउ आई गेस देयर इज no need for explaining this point, right? आपको पता ही है what is branched and unbranched one. Example you people have to memorize. If stem is unbranched, इसके example में क्या आएगा बेटा, caicus, and branched के example में क्या आएगा आपका pinus. Am I clear? तो this is very simple description of stem. Very simple description of your stem. ठीक है, roots पढ़े, stem पढ़े, किसकी बारी आई अब? Over here I am writing. Now we are going to discuss your leaves. We are going to discuss your leaves. Am I clear? Okay. If we are talking about these leaves, right? Then these leaves can be, over here I am writing, these leaves can be simple or it can be compound. Okay, now what do you mean by simple leaf and compound leaf? The meaning is very simple. देखो, in certain plants, say for example, ये stem है, right? In certain plants, you have seen such type of leaf in which your leaf are intact. वो पूरा है, leaf are intact. Such type of leaf are called as your simple leaf. उसको क्या कहा जाता है, सिंपल लीफ. ओके, एंड कंपाउंड इफ आई वांट टू से, राइट, देन देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ मैनी लीफलेट्स. एज यू कैन सी, ये जो मैंने ड्रॉ करी है, द पोर्शन विच आई एम बोल्डिंग, राइट, दिस आर योर लीफलेट्स. ओके, आपने देखा होगा करी पत्ता. Yes, curry leaves you people have seen. You people have also seen neem. Yes or no? Yes. Such type of leaf are called as compound leaf. To be more specific, such type of leaf is called as your compound pinnate. क्या कहा जाता है इसको, compound pinnate. Okay, and such is seen in case of your, example you people have to memorize, such is seen in case of your caicus. Am I clear? Such is seen in case of your caicus. Caicus I guess आप सभी ने देखा होगा, ये कुछ ऐसा होता है, ये मेन मिड रीप होती है, right, and there will be presence of like this needle shape leaflets as you can see over here, है ना, ऐसा कुछ होता है caicus. तो ये जो बच्चों मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है, दिस आर द लीफलेट्स, राइट, विच आर नीडल लाइक, यू कैन से, विच आर नीडल लाइक. तो ये जो प्लांट यहाँ पे मैंने ड्रॉ करा है, दिस इज योर काइकस एंड सच लीव्स. ठीक है, ये जो लीव्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ करे, दिस लीव्स आर कॉल्ड एज कंपाउंड पिनेट leaves. इसको क्या कहा जाता है, compound pinnate leaves. Am I clear? Okay. Now if we are talking about these leaves, right, then there are certain adaptations which are exhibited by xerophytic plants. Xerophytic plants, in the sense we are talking about those plants who grows in arid condition, who grows in dry condition, right, जहां पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है. So plant must have some adaptation to reduce loss of water. Am I clear? So here what I am writing, ये जो leaves होते हैं, right, the leaves are arranged
in such a way that they can tolerate, okay, they can tolerate your high temperature, moisture and wind. Okay, the leaves are such that they can withstand, they can tolerate high temperature, right, moisture and wind. Am I clear? Apart from this, जैसे मैंने आपको बोला, if I am talking about your conifers आप सबने नाम सुना होगा. Yes, conifers, they have needle shape leaves. उनके जो होते हैं वो कैसे होते हैं? needle shape leaves होते हैं. Am I clear? What is the reason for this needle shape leaves? To reduce surface area and thus to prevent water loss by transpiration. What is transpiration? You people have already understood in class 10. आपने समझा है. Once again, let me recall it. Transpiration is nothing but loss of water in form of vapor. In form of vapor, उसको कहा जाता है transpiration. Am I clear? Okay, and this transpiration occurs by means of a structure called as stomata. आप सबको पता होगा स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट है? लीव्स पे प्रेजेंट होता है. इट ओपन्स एंड क्लोजेस. When it opens, there will be loss of water in form of vapor and इसको कहा जाता है transpiration. ठीक है, तो ये जो कॉनिफर्स है उसमें लीव्स कैसे हैं? निडल शेप है. निडल शेप लीव्स मतलब कुछ ऐसे हो गए, राइट? तो इसकी वजह से जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है. सरफेस एरिया कम हुआ तो वाटर लॉस which is occurring by means of transpiration is also reduced. Am I clear? Apart from this needle shaped leaves, they are having thick cuticle. They are having thick cuticle. बच्चों, जो लीव्स होते हैं, राइट, लीव्स के ऊपर एक लेयर होता है, वैक्सी लेयर होता है. दिस लेयर इज कॉल्ड एज क्यूटिकल. ये लेयर को क्या कहा जाता है? क्यूटिकल कहा जाता है. इन सच प्लांट्स ये क्यूटिकल लेयर होता है थिक. अभी मैंने बोला इसका नेचर क्या है? इट इज वैक्सी इन नेचर, right? And due to this, again there will be prevention of water loss. Okay, apart from this, they are having sunken stomata. Okay, once again, sunken stomata जो है, this all are the speciality: needle shaped leaf, thick cuticle, sunken stomata. Sunken stomata is nothing but a kind of stomata which occurs in small pit. Which occurs in small pit and इसका काम होता है to prevent loss of water. Okay, so what I have written, ये जो sunken stomata है, they are present in small pit. Of course, this we are talking about leaves only. They are present in small pit and इसका function क्या होता है? To prevent water loss. To prevent water loss. Am I clear? So this we have discussed about your vegetative parts. Vegetative parts in the sense we are talking about your root, stem and leaves. वापस से एक बार, some of your roots have association with fungus, some of your roots have association with cyanobacteria called as mycorrhiza and coralloid root respectively. Yes, one thing I forgot to tell that ये जो roots होते हैं, ये जो रूट्स होते हैं, राइट, दिस आर योर टेप रूट्स. नाम सुना है ना आपने? दिस आर योर टेप रूट्स. ओके, फॉर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, टेप रूट क्या होता है? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट योर सीड, यहां पे आ जाओ, ये सीड है, राइट, सीड हैव एम्ब्रियो, एम्ब्रियो होता है. ओके, नाउ embryo if we are talking about, then this embryo have two regions. ये जो embryo है इसके पास दो regions होते हैं. Number one is called as your plumule and यहाँ पे जो होता है इसको कहा जाता है radicle. Radicle give rise to root system, plumule give rise to
shoot system. Am I clear? Okay. Now, if we are talking about your tape root, तो वापस से this diagram I am drawing here once again. The root which develops from radical. Radical से जो root निकलता है ऐसा, ऐसा, right? This root is called as primary root. इसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी रूट. वो आप सबने मगभत कड़ी खाई होगी ना? यस और नो? इफ यू हैव सीन दैट मूंग, राइट, कुछ निकलता है ऐसा मूंछ जैसा, यस और नो? दैट इज नथिंग बट प्राइमरी रूट. वो क्या है बच्चा? आपका प्राइमरी रूट है ना? मम्मी क्या करती है? वो मूंग को भिगो के रखती है, राइट? दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ रूट्स. दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रूट. बड़े अच्छे से आप जो खाते हो वो, राइट? तो जो रेडिकल से रूट सबसे पहले बाहर निकला, इसको कहा जाता है प्राइमरी रूट. ठीक है? नाउ इफ दिस प्राइमरी रूट इज लॉन्ग लिव्ड, इट इज परसिस्टेंट, राइट, इट गिव्स राइज टू, देखो ये सेकेंडरी रूट निकला, राइट? देन सेकेंडरी रूट से क्या निकलेगा? ये टर्शियरी रूट, एज यू कैन सी ओवर हियर. यस और नो? such root system in which your primary root is long. दिखाई दिया ये मैंने जो बोल्ड पोर्शन किया है वो. Primary root is long, right, as well as it is long lived and it is persistent. Such is called as tape root system. इसको क्या कहा जाता है? टेप रूट सिस्टम कहा जाता है. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर जिम्नोस्पर्म्स, तो इसमें होते हैं टेप रूट सिस्टम. ओके, स्टेम कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड. लीव्स आपको अच्छे से समझ आया? इट कैन बी सिंपल और कंपाउंड. सिंपल मानी लीफ इज इंटैक्ट, ओके, whereas if you are talking about your compound pinnate leaf, यहाँ पे leaves as you can see they are not intact. They are not intact. Yes or no? They are incised. They are incised as you can see over here, resulting in formation of leaflets. ठीक है? And such compound pinnate leaf is present in caicus. It is persistent for many years. इनके जो रूट्स होते, सॉरी, इनके जो लीव्स होते हैं, दे कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड विंड. ह्यूमिडिटी इन द सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट मॉइस्चर ओनली. ओके, एंड लास्टली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर कॉनिफर्स, तो उनमें जो लीव्स होते हैं वो निडल शेप होते हैं, थिक क्यूटिकल होता है एंड संकन स्टोमेटा होता है. ऑल दिस थ्री आर एडेप्टेशन ऑफ प्लांट, are adaptation of plant for preventing water loss. For preventing water loss. Am I